SUVs, the segment has become quite complicated of late. आज के टाइम पे सब कुछ ही SUV है. Compact SUV, subcompact SUV and even luxury SUVs have taken on that upgradation trend and have gone monocoque. But then at this time, where does a proper old school SUV like this one, the Lexus LX500D stand? Well, at this time when the segment is dominated with Range Rovers and BMWs, which offer all the luxuries in the world, something like this still is very close to the heart of proper off-roading fans who want a nice dose of luxury in its appeal as well. So we are going to talk about that, how the Lexus LX500D is different in its segment and what else does it offer right in this video. So stay tuned till the end. It is going to be a detailed video and I'm Shuman Parasha. You're watching Car Bike 360. Keep following us for all the updates in the Indian car bazaar. चलिए शुरुआत करते हैं और Lexus LX500D को डिटेल में जानते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ. और अगर लुक्स की बात कर रहे हैं then one thing is for sure that this thing dominates the road, has a very commanding and solid road presence. और विंग मिरर में देखते ही गाड़ियाँ इसे जनरली साइड दे देती हैं. यस, एक बहुत बड़ा नॉवेल्टी फैक्टर भी है बिकॉज Lexus, दिस बैज इज़ नॉट ऑफन सीन इन इंडिया, सो पीपल विल वंडर कि कौन सी गाड़ी है ये. सो नॉर्मल रेंज रोवर या फिर BMW और इवन डिफेंडर आप बहुत आराम से रोड पर देख लेते हो. दिस इज समथिंग which gives you that novelty factor. The front end itself quite bold. The grille, the spindle grille is massive, humongous on the Lexus LX, and again you have Land Cruiser inspired body panels as well, because remember this is a sister unit to the Land Cruiser. So the hood itself, you have the same powerful dome, same treatment. Other body panels भी काफ़ी similar होते हैं. And the grille, it's flanked by this nice sleek LED DRLs. Now ये इन साइज़ बहुत छोटी नहीं है, बट कंपेयर टू द ओवरऑल फेस आपको काफ़ी स्लीक लगती है. यू हैव LED ट्रीटमेंट हियर, यू हैव नाइस L-shaped DRLs, boomerang DRLs so to say, and नीचे you have quite chunky curtains as well and nicely tucked in fog lights जहाँ पर आपको थोड़ी सी क्रोम डिटेलिंग भी मिल जाती है. सो अ नाइस कॉन्ट्रास्ट यू सी ऑन द फेस. अगेन लुक्स वेरी नाइस, हैज़ दैट लग्जरी अपील. और अगर मैं लुक्स की बात करूँ देन रेंज रोवर के इक्विवेलेंटली इसको प्राइस किया गया हुआ है. स्टिल I think this competes better with something like the Mercedes G-Wagon and something like the Land Rover Defender, because appeal अगर आप लुक की बात करें या फिर अगर आप इसके फीचर्स एंड द कंफर्ट की बात करें तो उस सेगमेंट से ज़्यादा अच्छी फेयर करती है. Now that said, अगर आप प्रोफाइल की तरफ आएंगे, typical SUV boxy silver that we SUV lovers actually quite admire, you get to see here as well, and a nice bling of क्रोम. अगेन विंडो लाइन पे आपको अच्छा क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, सटल क्रोम ट्रीटमेंट ऑन द ORVMs एज वेल. एंड देन द फेंडर्स, व्हाट आई रियली लाइक इज़ कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं किया गया है, हैज़ जस्ट द राइट मिक्स ऑफ मसल एंड सटलिटी टू इट. एंड इवन द व्हील्स, दीज आर मैसिव 22-inch alloy wheels shot in decently thick profile tires. तो यहाँ पर रोड पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ऑन रोड परफॉर्मेंस भी अच्छा है एंड कंफर्ट भी अच्छी ये देती है. द ओनली इशू इज़ दैट व्हेन यू विल बी टेकिंग इट ऑफ रोड, ये प्रोफाइल वहाँ पर कम पड़ सकती है. यू माइट एंड अप डैमेजिंग द साइड वॉल एंड दीज आर रोड टायर्स. सो यस, टायर्स आपको अपग्रेड करने पड़ सकते हैं. आई ऑल्सो लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ द अलॉय व्हील्स, क्वाइट नाइस ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स यू हैव. देन अगर आप पीछे के साइड आएंगे, the rear end of the car, the kink that you see on this quarter glass panel again looks quite nice. So in terms of design, I think it's very decent. It's not something that shouts about or is too angular, but something very right for a big bulky SUV. और फिर अगर हम रियर की बात करें तो द डिज़ाइन अगेन इज़ क्वाइट सिंपल. यू डोंट सी टू मेनी लाइन्स हियर ऑन द बूट गेट. You have sleek LED tail lights here. Again, these are conjoined, a nice elongated Lexus badging. You have the 500D LX 500D badging here and a decently sized skid plate again at the bottom as well. So even from the rear, the car looks quite decent. Not something again that shouts about its design, but something that looks very bold and very SUV-ish. Well,
The Lexus LX 500D is built on the same TNGA platform as the new Toyota Land Cruiser LC300, and the world has always loved the Toyota Land Cruiser through its imperfections. The Lexus LX 500D in all its might retains all the old school luxury without caring much about the current trends, and unapologetically so. Well, it is a trek inside the Lexus LX 500D, and that's obvious. Thankfully, the grab handles, they help. And on the inside, the old school charm continues, and in a very, it feels very luxurious but in a very traditional manner. The cabin soft touch upholstery is quite evenly spread across the cabin, and ये जो tan upholstery है on the seat, on the central console, काफ़ी अच्छी है लगती है in terms of treatment. In fact, dual tone treatment, black on the top, tan on the bottom of the dashboard, looks very nice. So with all the upholstery and finish and A-rated material, it still feels very plush. At the same time, it is quite well loaded as well with all the modern day features. For instance, you have this 12.3-inch touchscreen infotainment system that comes with wireless Apple CarPlay, but Android Auto use करने के लिए आपको wire connect करना पड़ेगा. Then you have this 7-inch touchscreen right here at the bottom of the screen, जहाँ पर आपको सारे AC controls के climate menu के controls मिल जाते हैं, and all the off-road controls and view you have right on this screen. So right from your G monitor records and your accelerator and brake access and details. In fact, आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो तो टायर कितनी टर्न हो रही है एंड द 360 डिग्री व्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाती है. अगेन अ नाइस फीचर, कम्स वेरी हैंडी, एंड आई क्वाइट लाइक द सेग्रीगेशन दैट हैज़ हैपेंड. फॉर इंफोटेनमेंट यू हैव द स्क्रीन अप टॉप, एंड फॉर ऑल द फीचर्स यू हैव द स्क्रीन. एट द सेम टाइम यू डोंट मिस आउट ऑन फिजिकल बटन्स एज वेल. तो आपको ईजी वन टच एक्सेस करने के लिए सारे बटन्स यहाँ मिल जाते हैं फॉर AC कंट्रोल्स, एंड यहाँ नीचे आपको ऑफ रोड कंट्रोल्स मिल जाते हैं. So you have low ratio and high ratio selection for this knob. इसको पुश करके आप आराम से select कर सकते हैं. You have drive mode selector right here. Then drive mode के लिए आपके पास यहाँ एक बटन मिल जाता है सेंट्रल कंसोल पे. You have DAC activation and crawl function activation as well. You have traction control selection here as well. सेंट्रल कंसोल पे और भी बटन मिल जाते हैं आपको, like you have your diff lock, then you have air suspension control. So 3 राइट एडजस्टमेंट के साथ ये आती है. हाई प्लस नॉर्मल लो, 4 राइट सिलेक्शन के साथ ये आती है. सो एयर सस्पेंशन राइड हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाती है. बट अगर और फीचर्स की हम बात करें, then you have ventilated seats here. So both the front seats are ventilated and are powered. आपको पीछे भी ventilation का फंक्शन मिल जाता है. Ventilated and heated seats हैं ये, and power adjustable भी हैं with memory function. So 16-way power adjustable seats these are. Driver seat के लिए memory function आपको मिल जाता है. Then you have wireless charging here. You have a single pane sunroof. आपको एक proper panoramic sunroof नहीं मिलता जो रेंज रोवर में देखने के लिए मिलता है या फिर इसके और सेगमेंट राइवल्स में देखने के लिए मिलता है. बट एट द सेम टाइम आई सेड कि आई कंपेयर दिस कार बेटर विथ अ मर्सिडीज G-Wagon और अ लैंड रोवर डिफेंडर. उस मामले में इट गिव्स अ बेटर सेंस ऑफ लग्जरी ऑन द इनसाइड एंड कैन डू ऑल द टफ जॉब एज वेल, जिस पर हम बाद में बात करने वाले हैं. अगेन उसके बाद अगर हम बात करें मेरे सामने की चीज़ों की, तो आई हैव अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट हियर विद एनालॉग डायल सेटअप. क्वाइट लाइक द ट्रीटमेंट. स्टीयरिंग भी आप पावर एडजस्ट कर सकते हैं फॉर बोथ हाइट एंड रीच, एंड यू ऑल्सो हैव अ नाइस 25 स्पीकर मार्क एंड लेविंसन साउंड सिस्टम इनसाइड दिस कैबिन, जिसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ऑटो डिमिंग मिरर, आई डोंट नीड टू मेंशन. इनफैक्ट सारे तीनों जो मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर्स, बोथ विंग मिरर्स एंड द IRVM, all 3 are auto dimming. So yes, in terms of features, I think I really can't complain. One highlight is that central console में आपको proper frizz मिलता है जिससे आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं, even from co-driver side और driver side. And this is actually quite deep. आप यहाँ पर आराम से एक 1 लीटर वाटर बॉटल रख सकते हैं और काफ़ी ठंडा ये कर देता है चीज़ों को. एक छोटा बिन और मिलता है जहाँ पर आप स्नैक्स रख सकते हैं. फिलहाल मैंने वॉलेट रख रखा है. स्टोरेज स्पेस की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है. वायरलेस चार्जर तो है ही, बाकी फ़ोन्स आप यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में आराम से स्टैक कर सकते हैं. So yes, in terms of features or utility, the cabin scores quite well and at the same time retains that old school charm which proper SUV lovers really like. With that, let's get on the rear seat and see वहाँ पर feeling कैसी है.
इट्स अ ट्रैक एट द रियर सीट एज वेल, लेकिन राइड हाइट नीचे करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं. एंड अगेन ग्रैब हैंडल्स दे हेल्प. एंड व्हेन यू आर ऑन टू द रियर सीट, अगेन नी रूम आपके लिए थोड़ा इशू हो सकता है. यस, it's just about adequate. The driver seat is set at my driving position. I am 5 feet 10 inches tall. और यहाँ पर मेरे पास नी रूम बिल्कुल एडिक्वेट है. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट अनकम्फर्टेबल. That said, the seats, they are quite comfortable. I have decent under thigh support. थोड़ी सी लो है, but still the under thigh support is good. Nice backrest angle that reclines as well, and the cushioning is right on point. Not too soft, not too firm. So on a longer commute, लंबी दूरी जब मैं तय कर रहा हूँ इस गाड़ी में, I think I will be comfortable. हाँ, नी रूम थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती, then that would have helped. But again, remember, body on ladder proper 4x4, so floor height उसके कारण भी ज़्यादा हो जाती है to just fit in the 4x4 mechanism, the transfer case, and to make its break-even angle, aperture and departure and approach angle better. So उस point of view से भी I think थोड़ी सी compromise आपको यहाँ पर नी रूम में और floor height में देखने के लिए मिलती है. But उसके अलावा अगर हम features की बात करें तो I just can't complain. You have a center armrest, cup holders जो आप pop out कर सकते हैं. You have 4-zone climate control and there's a massive central console right here जहाँ से मैं climate menu access कर सकता हूँ. Again, the rear seats are also ventilated and have heating function. I have 2 screens on both the sides. So this is the 11.9-inch touchscreen entertainment screen, rear entertainment screen with HDMI connectivity. So even if you want to play PlayStation, you can do on this very screen. और या फिर अगर आप कुछ भी देखना चाहते हो, all the access you have right from here. The Mark & Levinson sound system, you have roof mounted speakers as well, both at the rear and at the front. So again, quite an acoustic feeling. And overall, in terms of headroom or in terms of overall comfort, the cabin feels very good. The only complaint at the rear is with the knee room, जो थोड़ी सी better बिल्कुल हो सकती थी. Yes, like this sunsides as well, जो manually आपको operate करने पड़ते हैं. But after this, let's get to the meat now and see that what powers this car and then how is it behind the wheel. It is a well put together cabin and I love the fact that it feels more car like than tech on wheels. मैं इसे सेगमेंट की सबसे बेहतरीन cabin तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात पक्की है, this thing is built to last and I don't mind compromising a bit on the sophistication over durability. So under this hood is a big fat 3.3 liter V6 diesel engine, which is a rare breed in itself क्योंकि V6 अब बहुत कम देखने के लिए मिलती है. Lexus LX 500D is the only car in its segment जहाँ पर आपको V6 engine देखने के लिए मिलता है. This is a proper twin turbo V6 engine that belts out 300 brake horsepower at 4000 RPM and a whopping 700 Newton meters of peak torque from 1600 to 2600 RPM and is mated to a 10-speed automatic gearbox. Now, this clocks triple-digit speed, 0 to 100 km per hour की run ये करती है in 8 seconds and is quite heavy as well. Almost 2700 kilos, 2690 kilograms to be precise. Now, this engine, for us, it's time to see that how it actually feels on the road. So let's get behind the wheel and let's get this baby rolling. And now behind the wheel of the Lexus LX 500D, and the moment you start driving it, you get to feel how old school this SUV is in every single bit. The engine performance, that V6, that raw power delivery is there, is likable. The kind of rolls and pulls this SUV will give you, वो आपको पसंद आने वाली है. And to be very honest, अगर आपको पुरानी SUVs पसंद आती हैं, if you love the way they behave and just the kind of heavy they feel, I think you are really going to like even this SUV. And yes, obviously this is a head turner because जहाँ भी आप इसको लेके जाते हो सब मुड़ के भी देख रहे होते हैं. Just one honk और लोग आपके वे से हट भी जाते हैं. So yes, quite a solid and commanding road presence जैसा हमने पहले आपको बताया था. But yes, in terms of power delivery, as far as you are cruising normally on the highway, I think it will keep you comfortable and settled
and engine will feel relaxed, and the moment you switch to Sports S or Sports S Plus, just hear this engine growl. It's a big angry growl, and you like that noise, and it just pulls strongly, goes on and on a straight line. So straight line पे आपको कोई भी issue नहीं होने वाली है. Builds up on speed quite quickly. So 8 seconds लगते हैं 0 to 100, but again it feels very quick, and the best part is that it doesn't make its weight feel too much on a straight line. That said, show it a corner, show it a turn, or just make a lane change, and it's exactly when you are going to feel every single kilo that this SUV has. Yes, it feels very heavy there. Again, all that weight doesn't favor handling at all. आप you will be compelled to slow down the car. आपको गाड़ी बहुत आराम से फिर चलानी होगी, and even the steering wheel, it lacks feedback. It's not very communicative, and there is a centrist lag again here. So yes, those are some challenges, but those are typical characteristic of an old school 4x4 body on ladder SUV, and the same thing you are going to feel here as well. So raw power, you have got it, and then when it comes to ride quality, बहुत comfortable highway पे feel होगी. If you are just cruising normally, I am doing 85-86 kilometers per hour within speed limits, even 100-120 kilometers per hour, it feels very settled and is very easily manageable. It soaks all the undulations and all the bumps quite well, and the best part, suspension is biased on the softer side. Still, you don't feel much of those vertical movements inside the cabin when you are taking on the undulations of the highways. So it feels very comfortable there, and you can go for a long commute, you can munch miles quite comfortably in this cabin. And when you encounter a pothole, you're not going to feel it at all, or any serious rough patch or rough terrain. Again, it won't feel very unsettled, or it won't toss you up very harshly, जो हमें पहले लगा था हो सकता है. So yes, that is something which I like about the car. So ride quality department, to be honest, is completely sorted. Handling department, obviously it's an old school body on ladder SUV, मेरी expectation बहुत थी भी नहीं. Engine power is something I quite like. The mid-range is strong, overtaking on highways very easy, and even towards the top end there's some pull left. Well, handling के साथ हमें ज़्यादा परेशानी फिर भी नहीं है, because that's what we were expecting from an absolute behemoth this size. जो चीज़ हमें परेशान करती है वो है इसकी braking, which could have been a bit better. Since this is quite a tall and heavy SUV, bringing it to a sudden halt can be quite challenging. And finally, some fun time with the Lexus LX 500D, because we are on a small off-road track here. देखने के लिए कि ऑफ-रोड परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, और ऑफ-रोडिंग की हम जब बात कर रहे हैं, then this is the area where this luxury SUV actually shines, because take it anywhere, give it any beating that you want, but this is going to perform still. और उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू समझ में आती है. To be honest, if you are someone who travel to your farm quite often, or to your village, जहाँ पर रोड ख़राब ज़्यादा हो सकते हैं, टेरेन चैलेंजिंग हो सकते हैं, पहाड़ों पे आप हैं, I think this is a better suited luxury SUV, because it keeps you very comfortable and it can take on any terrain quite easily. Yes, tires जैसा हमने पहले बताया था, थोड़ा उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है स्टॉक टायर्स में, but the simple way to go about it is कि upgrade to an all-terrain tires with a slightly thicker profile might be, and you are good to go. You are sorted. The underbelly is quite strong there, and even when I am off-roading, let's say there's a small obstacle here, the good part is that even if I'm hovering it over all these terrains, the vertical movements, it's soft, and surprisingly it's contained. Suspension soft है, मैं vertical movement ज़्यादा expect कर रहा था, but again it feels settled and keeps you comfortable, and even seats help there because यहाँ भी cushioning काफ़ी अच्छी है. So honestly, it's very easy going off-road. And if you encounter a challenging obstacle like this, जहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है, just a gentle push on the throttle and it's a cakewalk. So yes,
When it comes to tackling the rough, Lexus LX 500D shines there. Other than the mechanicals, the Lexus LX 500D has got its basics right as well. With an approach angle of 21 degrees, departure angle of 21.7 degrees and 210 millimeters of standard ground clearance, it can do some serious off-roading. Don't forget, it's a Land Cruiser under the skin. So finally, what's the Car Bike 360 verdict? Well, एक बात तो है that the Lexus has always remained one of politicians' favorite, and you know why? Because it has that powerful road presence, something that commands the road and something that really dominates. Compared to other segment rivals like the Range Rover, yes, it doesn't fare very well in terms of features or drivability or comfort, but then if you'll compare it to something like the G-Wagon or Defender, it still feels a bit more luxurious. So I will put it somewhere between the Range Rover or the Defender. Very luxurious on the inside and still has that proper old school SUV off-roader appeal to it. So yes, if you're something who still have that love for old school body on ladder off-roaders and you want something that feels very luxurious, I think the Lexus 500D can be one of your worthy considerations, and priced at 2 crore 82 lakh rupees ex-showroom. Yes, this is slightly on the expensive side, but remember, a good alternative to the Land Cruiser as well, because उसकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है और अपने सेगमेंट में अंडर द स्किन इट इज़ एसेंशियली अ लैंड क्रूजर. बस हाँ, ऑफ रोड लेके जा रहे हो तो टायर प्रोफाइल अपडेट पक्का करवा लेना. On that note, I am Shubham Parashar signing off. Keep watching Car Bike 360 for all the updates in the Indian Car Bazaar, and don't forget to follow our YouTube channel, subscribe to it, hit the bell icon, because lots and lots exciting automotive content coming your way. Soon we are also going to start our इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉडकास्ट, जहाँ पर हम काफ़ी कैंडिड वे में, काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं with quite key professionals of the Indian auto industry. So look forward to that as well.